You must be very tired. You've been going all day. थकना शब्द हमको ऐसे लगता है जैसे हमारी शोभा नहीं है. It's not my honor to use the word tired. जब उस समय सफला हो रहा है, खुशी हो रही है, थकना हो नहीं सकता. Time is being used in a worthwhile way, and I'm happy about that, so it's not a question of being tired. मैं ब्रह्मा बाबा को देखती थी, कभी थकता ही नहीं था. तो मैं कहती थी जितना परमात्मा की इसको शक्ति मिली हुई है, मुझे भी ये थोड़ा देर देकर मैं थकूं नहीं. I used to see Brahma Baba, and you would see that he was tireless. And at that time, I used to wonder where he got his energy from. And I used to say, I would like to have the same energy. परमात्मा के साथ लिंक कैसी जुटी हुई होती, हमारी सेवा भी करता था, नहीं ऐसे तक. We saw that he was continually in that communication with that link with the Supreme, and as a result of that, he had such energy that he would be serving all of us and many others. उसके बारे सुनाने बैठेंगे तो आपकी और इंटरव्यू रह जाएंगी. If I were to start sharing stories about him, your other questions would get left behind. Was there a moment when there was a fundamental shift in which you knew then you had access to the same source of energy and power that he did? ये कि अंदर का जैसे नेत्र खुल जाता है ना. Yes, there was a moment when the inner eye opened. अपन को देखा ना तो मैं क्या हूँ. To see myself and know who I am. ब्रह्मा बाबा को देखती थी ना, इसका भी अंदर उससे डायरेक्ट परमात्मा से ऐसा कनेक्शन है जैसे शरीर इसका दिखाई नहीं पड़ता है. And when I'd see Brahma Baba, I'd see that there was such a direct link with God that it was as if his physical form was not visible. यहाँ से लाइट निकलती थी. It was light radiating from his forehead. मुख से जो बोल कहते थे, ये नहीं बोल रहा है जैसे परमात्मा के थ्रू बोल रहा है और हमारे दिल को टच कर रहा है. It was as if he wasn't speaking, but he was an instrument for the divine to speak through him, and those words were touching our hearts. जो गीता पढ़ते भगवत गीता पढ़ते समझ में नहीं आता था, वो समझ में आने लगा अच्छी तरह से. I had studied the Gita and scriptures, but hadn't understood. And तो now it was as जैसे if कि I could understand. माँ बाप बहन भाई जिसके साथ इतनी अटैचमेंट थी, ये सब मेरे ने. मैं अकेली आत्मा ईश्वर के घर से आई थी, फिर से ईश्वर की बन रही हूँ. There was this amazing experience through Brahma Baba looking at me, that awareness of God's remembrance, that I, the soul, am totally free from the consciousness of the body, detached from the body, and I am separate from this body, my relatives, mother, father, the whole physical world is quite separate, and I, the soul, belong to God. जब इस आँखों को देखते थे, तुमको क्या, बस मैं ईश्वर की हूँ. जैसे इंसान मरा हुआ होता है तो उसकी आँखें खुली, पर मरे हुए की अलग होती है, ये कि इस दुनिया से दूर है, एक ईश्वर के साथ है. It brought such a deep transformation. It was like when a person dies, then the whole world dies for that person. There's nothing. In the same way, death, of course, is a physical experience which is different. But in this case, it was like the soul became totally separate from the body, and it was a feeling that I don't belong to this world and nothing here belongs to me. इंसान जैसे कोशिश कर डिटैच होना इम्पॉसिबल है, कैसे होगा. परंतु शरीर के संबंधी है, ये तो विनाशी है, तो आज है कल न रहेंगे. कर्मों का हिसाब किताब है. If a person tries to be detached, it's usually quite difficult. But in this case, it happened in such a powerful, natural way, that state of detachment in which there was the awareness that all of the physical things and all physical relationships were temporary because they belonged to the world of matter, and so had a finite limit to them, and I, the soul, am eternal. So what is the purpose of creation? In other words, why was the universe created? And therefore, why are we human beings here? तो ये तो सारा तुमको बताऊं बैठ के. So should I tell you the detail? Please. अच्छा, पहले हम सब शास्त्र पढ़े हैं, परंतु शास्त्रों में से आंसर पूरे नहीं मिलते थे. I had studied the scriptures of India, but hadn't found answers. तो जब समझो कंफ्यूजन था. There was confusion. कोई कहता था ये जगत मिथ्या है. Some were saying that the world is an illusion. सुपन है. It's a dream. ऐसे कैसे मालूम मिथ्या है, जगत तो है ना. And yet I was seeing the world around me. How could I believe it's an illusion? तो भगवान से क्वेश्चन पूछती थी, भगवान ये क्या है सब. So I used to ask God, what is the purpose of all this? भगवान कहता है बच्ची, ये सृष्टि का चक्कर है. And God explains, the world goes through a cycle.
पहले आदि जो था ना एक देवता धर्म था, At first, it was the one divine way of life वो लंबा समय चला था। that lasted for a long period of time. फिर इब्राहिम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, Then all these prophet souls came, और धर्म भी Abraham, स्थापन हुए। Buddha, Christ. अब इस सब धर्म है जो है ना सतो रजो तमो से पास करके सब धर्मों में धर्म की सत्ता चली गई है। And now we have the situation where all the religions are here, but that spiritual strength of the religions has been lost. न धर्म में न राज्य में नहीं रही है। There's no strength left either in religion or in governance. झूठ और हिंसा। There's falsehood and violence. अभी ऐसे टाइम पर And at such a time, भगवान कहता है God says, तो अब जागो, time to awaken. अंधेरी रात जा रही है, The night is finishing. सत्ययुग आएगा। The golden age, the age of truth is about to come. सभी आत्माएं कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ऊपर से Population आ has गई है। increased so hugely. All the souls from the home are down here now. All the souls from The home are down here on the world the scale, home being the place of light. आत्माओं का घर तो असुतवा है। The home of souls is the world beyond. ब्रह्मा बाबा को भी परमात्मा ने बताया ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। Rama Baba understood from the guidance he was receiving from God that this is the final birth, हमको भी a preparation for the next cycle. हमको भी याद आ रहा है ये हमारा अंतिम जन्म है। I also have to remember that it's my final birth in the Iron भले Age. जितने दुनिया में पाप है इतना पाप नहीं किया है, परंतु निर्विकारी तो नहीं है। It's time to finish the account of sin and become completely आत्मा viceless. है And the soul has to come again back to that state of तो purity. भगवान याद दिलाता है। God reminds us, तो ओरिजिनल तुम असली आत्मा परमात्मा के देश में बड़ी प्योर थी। you were in the home with God, you were very pure. So there must have been a reason why God manifested himself, why he created the universe. Because in his primordial state, he was already pure and perfect. This exercise, from his point of view, wouldn't seem to be necessary. अच्छा क्वेश्चन जैसे भगवान से हमने पूछा तुम Good पूछ रहा question. है। भगवान ने समझाया है इस परमात्मा अविनाशी है, पतित पावन है। God is eternal, is the purifier. आत्माएं सृष्टि चक्कर में पाठ बजाने आती है। Human souls come into the world cycle to play their part. ये चक्कर भी अनादि अविनाशी है, Cycle is also eternal. जैसे ड्रामा बना पड़ा है। It's a drama that's fixed. परंतु ये भगवान फिर जब सृष्टि में अंधकार होता है But when there's darkness on the earth, तो ऐसे टाइम पर such a time, भगवान को अपना शरीर नहीं लेना है, ब्रह्मा बाप के तन का आधा लेता है। God incarnates and he doesn't take a human body of his own, but he works through the body of Brahma Baba, प्यूरिफाई बनाने के लिए, पावन बनाने के and लिए। he comes to purify us. पतितों को पावन बनाना उनका काम है, It's God's task to purify the impure, सृष्टि को बदलना उनका काम है। transform the world. पर तो हम कहते हैं आपका काम है तो आप करो ना, कहते तेरे द्वारा कराऊंगा। But he can't do it alone. He says, I'm going to get it done through you. सृष्टि को नरक तुमने बनाया है, स्वर्ग तुम बनाएंगे। You created hell in the world, and so you have to be the instruments to create heaven. तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। Then you could be the masters of heaven. परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है। God has been called the one who works directly and works through others. जैसे तुम भी ये प्रेरा हुआ आया है, So you also been touched by God. तो तुमको क्या पता, मेरे को क्या पता। I didn't know you, you didn't know me. मेरे अंदर से ये भावना है भगवान को सब जाने, कैसा है वो भगवान। My deep desire is people should know God. Who is that God? तो And I अनुभव would say, कहता है how is that मनुष्य को, possible? जो आज का कलयुगी मनुष्य को सत्युगी देव समान बनाए, भगवान ही बनाता है और कोई बना नहीं सकता है। Only God can transform human beings from their condition in So the we- impure world कन्याओं- of the Iron Age and transform them into the divine beings of the Golden Age. अब अभी कोई हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, कोई विचार नहीं करते हैं। I don't read scriptures anymore, I don't read the Granth anymore, I don't prepare speeches. नेचुरल Whatever is natural is जैसे वो shared. भगवान मेरा बाप है, माता है, पिता है, स्वामी है। God is my mother, my father, my friend, my मेरा है। teacher, my Lord and Master. He's mine. और वो भी कहते तू मेरा है। But he also says, you are mine. ये भी देखा है, भगवान देखता है जिसका कोई नहीं है उसका भगवान ख्याल करता है। जो समझता है मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मेरा मित्र है, समझ लिया, तो भगवान क्यों ख्याल If I have no one, God looks after me. If I say I have
friends and relatives and this one and that one. God says, that's fine, let them look after you. One more question. That the goal of the path is transcendence of the body and the world, and yet at the same time, so much of your work seems to be about the upliftment of the world at the same time, the transformation of the world. So what's the relationship between the desire to be completely free from the world and from the body, and at the same time the passion to transform the world and to uplift the world? ये भी भगवान से क्वेश्चन पूछा है. It was a question I asked God. कई बार हमारा शरीर ऐसा चला है जैसे शरीर छोड़ने की घड़ी आ गई हो. There have been many times when I've come to the point of death, leaving the body. बहुत मुझे पता होता है जैसे छोड़ना है. बहुत बीमारियां पास हुई है. Because I've been through many physical illnesses. तो मैं कहेंगी मैं छोड़ दूँ. I say, God, is it time to leave? अभी प्रकृति तुमको साथ देंगी, तुम ईश्वर तुमको संदेश देना है. But the answer always comes back. Nature, matter will cooperate with you, but you still have to share a message with the world. 51 में मुझे ऐसे अचानक ब्रह्मा बाबा ने दृष्टि दी, मुझे साक्षात्कार हुआ था. 1951, I suddenly had a vision when Brahma Baba was sharing that vision of soul consciousness. तो साक्षात्कार उसमें भगवान एक लाइट का गोला है. I saw God as a being of light. तो मुझे दिखाई नहीं पर मैं उसको लेकर सारी दुनिया घुमा रही हूँ. And it's as if I was going around the world, showing the world this light. भगवान देखे कैसा भगवान लाइट है, कितना So that the अच्छा है world should भगवान, see, कितना है. this is God, this is the being of light, how तो beautiful वो is God. साक्षात्कार ऐसा हुआ था जो मुझे पता नहीं था मैं कभी देश में आएंगी, ये सारा प्लेन में चढ़ती रहेंगी, उड़ती रहेंगी. Of course, I had no idea that I would travel abroad, that I'd be circling the globe so often. तो अंदर से ये सब देखे जाने परमात्मा कितना अच्छा है, कितना Just that, सुख देता है. that deep motivation, I want the world to be able to see God and be able to experience that love दुख and खलास कर happiness, देता है. the one who removes our sorrow. ब्रह्मा बाबा को देखती थी, वो सोता ही नहीं था. I used to see Brahma Baba and it was as if he never slept. रात को 11 बजे जाऊं तो भी बाबा रेस्ट करो, बच्चे जितना जागेंगे उतना अच्छा है. I'd go 11 o'clock to his room, Baba, it's time for rest, and he'd say, उस no टाइम भी child, हमको as much as I can stay awake, it's good. उस टाइम भी सिखाता था रात को उस बच्चे कैसे सोना चाहिए भगवान की याद. And he would teach us how to sleep in God's remembrance. 2 बजे जाएंगे तो जागता होगा. I'd go at 2 a.m. and he'd still be awake. दुनिया रो रही है, बाप सो कैसे सा. And he'd say, the world is crying, and so how can the father sleep? देखती थी. 4 बजे जाऊं तो भी बाबा कह रहा है 4 o'clock in the morning, ऐसे लेटा हुआ है. he would be lying awake. तुम्हारे जैसे बच्चों को याद कर रहा हूँ, अच्छे बच्चे बन जाए, दुनिया को जगावे. And then he'd say that I was remembering children like you who can wake up the world so that then the तो world can change. भगवान चाहता है तो ऐसे मेरे बच्चे कोई होवे जो दुनिया को दुखियों का दुख दूर करे. God wants children who can remove the sorrow of those who are suffering. जितनी सेवा करते हैं उतना बहुत जरूरत है. सब मेरी आइटनरी देख करके कहते तुम क्या करती हो. When people see my itinerary, they're a little bit मैं shocked नहीं because there's so करती. much travel. And they say, how will you manage? But I know that वो I don't चला have to रहा do है. anything, but he is making me move, and I know that there's a lot to be done. जहाँ आवश्यक है वहाँ हाजिर होना है. I have to be available and present wherever there's a need. सूक्ष्म ये बात है, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं होगा. On a subtle level, my inner मुझे कुछ effort is चाहिए. that I never want anything. I've never asked for anything. ब्रह्मा There's बाबा nothing ने I need. कहा बच्चे तुमको कुछ जो तुमको आवश्यक तेरे पास आप ही आएगा. Brahma Baba had said, whatever your needs are will be met. It'll come to you automatically. अपने आप. It comes automatically. पर तुम फिर बाबा को ये जहाँ आवश्यकता होगी मैं हाजिर होंगी. But I have to say to God, I'm going to be available wherever there's a need. किसी को अपना दुश्मन नहीं मानो. Let me not think of anyone as my enemy. सबका भला सोच. Let me think of good for all. भगवान कहते हैं तुम ये. And so God says, this is what you have to do. हम कहते हैं हाँ. And we say, yes, we will. आप कल्याणकारी, हमारा कल्याण क्या विश्व का कल्याण हो जाए ये भावना है. It's a feeling that there should be benefit for the whole world. Thank you very much. Thank you.